नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पहिल्या प्रवासी व्यावसायिक विमानाचे यशस्वी लँडिंग झाले। इंडिगो A320 या विमानानं मुंबई विमानतळावरून टेक ऑफ केल्यानंतर थेट नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 1:38 यशस्वीरित्या लँडिंग केले। यशस्वी लँडिंग झाल्यानंतर विमानाला ऑस्ट्रेलियामधून आणलेल्या 2 वॉटर कॅनलच्या माध्यमातून सलामी देण्यात आली आहे। यावेळी विमानतळावरील कर्मचाऱ्यांनी टाळ्यांच्या कडकडाटासह जल्लोष केला, तर वैमानिक हवाई सुंदरी यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले। यावेळी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, अदानी एअरपोर्ट अरुण बन्सल, आमदार महेश बालदी आदी मान्यवर उपस्थित होते। दरम्यान नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर यशस्वी व्यावसायिक प्रवासी वाहतुकीचे विमान लँडिंग झाल्यानंतर हा नवी मुंबईकरांसाठी ऐतिहासिक दिवस असल्याचे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी स्पष्ट केले। तसेच 17 एप्रिल 2025 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सज्ज होणार असून त्यामध्ये रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, लाइटिंग सिस्टीम ही पूर्ण होणार असल्याचे विजय सिंघल म्हणाले। आपण डिफेन्सचा C-130 प्लेन लँड केला। आपला एअरपोर्टचा जो रनवे आहे तो पूर्णपणे 3500 मीटरच्या पूर्णपणे सज्ज आहे, तयार आहे। त्याचा एक चाचणी म्हणून सुरुवातीला एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या विमानाने त्याला फ्लाईट प्रोसिजरचा पूर्ण केला आणि त्याच्यानंतर कमर्शियल फ्लाईटच्या इंडिगोच्या या सक्सेसफुल या ठिकाणी लँडिंग झालेली आहे। याच्यावर ते स्पष्टच आहे की आपण एअरपोर्ट आपला सर्व गोष्टीने आपल्या या ठिकाणी सज्ज आहे। सो आता हे जो नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहे, जो याचा कॅपॅसिटी जो जुना एअरपोर्ट आपला छत्रपती शिवाजी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहे त्यापेक्षा दुप्पट आहे आणि मला वाटतो की हे लवकरच आपण लोकांसाठी कमर्शियल फ्लाईटसाठी उघडा। या ठिकाणी आपण आपल्याला माहितीसाठी या ठिकाणी 4 टर्मिनल आहे। टोटल कॅपॅसिटी जर बघितली तर 90 मिलियन पॅसेंजर पर एनम म्हणजे 9 करोड पॅसेंजर पर वर्षी एवढी क्षमता आहे। जो प्रेझेंट एअरपोर्ट आहे छत्रपती शिवाजी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट त्याच्यापेक्षा दुप्पटच आहे। आपण टप्प्याटप्प्याने डेव्हलप करणारच आहोत। पहिल्या टप्प्यामध्ये ज्याची कॅपॅसिटी 2 करोड पॅसेंजर पर एनम असणारच आहे, त्याच्या आपण 17 एप्रिल आपण हे डेट ठेवण्यात आलेली आहे। ज्या 17 एप्रिलपर्यंत आपला तो एअरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग आहे, रनवे आहे, लाइटिंग सिस्टम आहे, इतर फील्डची सर्व गोष्टी आहेत। तर 17 एप्रिलपर्यंत सर्व गोष्टी आता एक बघा, आपण या ठिकाणी कामाकन गेल्या 8-10 दिवसामध्ये जर 8-10 महिन्यामध्ये बघितलं एअरपोर्टच्या फार प्रमाणामध्ये गती आलेली आहे। या ठिकाणी खूप मोठ्या अडचणी होती, ते सर्व अडचणी दूर करून आपल्या माहितीसाठी C-130 डिफेन्स प्लेनची लँडिंग केली, कमर्शियल प्लेनची लँडिंग केली, रनवे तयार आहे, टर्मिनल बिल्डिंग आपल्या समोर दिसत आहे। जवळजवळ एक 83-84% काम झालेलं आहे। मला वाटतं आपण सर्व सकारात्मक दृष्टिकोनाने पाहूया। निश्चितपणे वेळेवर या ठिकाणी एअरपोर्टच्या आपण जसं सांगितलं की आता जे छत्रपती शिवाजी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहे त्याची कॅपॅसिटी 45 मिलियन पॅसेंजर पर एनम आहे, त्याच्यापेक्षा दुप्पट कॅपॅसिटी आहे आणि आमच्याकडे या ठिकाणी 2 रनवे आहे। तो निश्चितपणे त्याचा भार तरी कमी होणारच आहे। बरेचशी फ्लाईटला मुंबईमध्ये लँडिंगची फॅसिलिटी मिळत नाही, प्राईम टाईमला किंवा इतर गोष्टींमुळे त्या ठिकाणी लँडिंगची फॅसिलिटी या ठिकाणी मिळून मोठ्या प्रमाणावर ज्या ठिकाणी सुविधा मुंबईतून उपलब्ध नाही ते सुद्धा उपलब्ध केली जाईल। आपल्याला एक आता काय असतो ते एक प्रोसिजरली आपण वेगळे टप्पे पार करून जातो। जसं मी सांगितलं की यामध्ये आपण त्याच्या रनवेची चाचणी झाली, लेफ्टची, साईडची, त्याच्यानंतर तुमच्या डिफेन्स प्लेनची लँडिंग झाली। आज तुम्हाला फ्लाईट प्रोसिजरची आणि तपासणी केली। DGCA साहेब डायरेक्टर जनरल सिव्हिल एव्हिएशन स्वतः या ठिकाणी इंडिगोचे विमानात बसून एअरपोर्ट सुरू करताना फार चाचण्या यावी लागतो, बिकॉज स्वच्छतेच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक होती असते, एक प्रोसिजरचा भाग असतो। आपण प्रत्येक टप्प्यामध्ये वेळेवर हे पूर्ण करत आलेलंच आहोत। आज हेही सक्सेसफुल झालेलाच आहे। त्यामुळे पुढे आता याचे नंतरच आपण एरोड्रॉम लायसन्ससाठी दाखल करणारच आहे। तो त्याच्यानंतर एरोड्रॉम लायसन्ससाठी आहे, त्याच्यानंतर ते आपल्याला परवानगी देणार, त्याची सुद्धा चाचणी होणार, सिम्युलेटर टेस्ट होणारच आहे। त्याच्यानंतर काही एअर प्रोसिजर असतो, मला ते डॉक्युमेंट पब्लिकेशन असतो, ते पूर्ण जगभरामध्ये की हे कधी सुरू होणार ते पण माहिती सुद्धा देणार। खूप लांबी चौडीचे प्रोसिजर आहे। तो प्रोसिजरचे अनुषंगाने आपण आज रोजी खूप वेळेवर चलने अपन यहाँ प्रयत्न करतो। आज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे 2 रनवे में से 3700 मीटर का रनवे इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग लाइटिंग एंड एवरीथिंग पूरा तैयार है। टर्मिनल बिल्डिंग का काम करीब 83-84% हो चुका है। बाकी जो काम है वो भी वॉर फुटिंग पे हमारा काम चल रहा है। निश्चित अगले 3 से 4 महीने में हो जाएगा। जो लोगों को एक आशा थी कि ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट कब शुरू होगा, ये आज हम सब के लिए एक बड़ी ही एक अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद ये अगले कुछ महीनों में ये लोगों के लिए खुला कर। देखो आज की तारीख में हमने जो प्लान किया है
जो प्लान किया है जिसमें कि अपन ये देखते हैं कि ये एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा, ये एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा, ये एक्टिविटी को, जैसे अभी एरोड्रोम लाइसेंस लेना है, एरोड्रोम एरोनॉटिकल इन्फॉर्मेशन पब्लिकेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड जाती है, और भी कुछ प्रोसीजरल भाग हैं। इन सब को देखते हुए हमको पूरी आशा है और उम्मीद है कि 17 अप्रैल तक हम ये कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा जो एयरपोर्ट है, इसकी जो एयरपोर्ट का सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ 4 टर्मिनल हैं। चार टर्मिनल की टोटल कैपेसिटी 9 करोड़ पैसेंजर प्रति वर्ष है। इसमें 2 रनवे हैं। हमारा जो प्रेजेंट जो एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें 1 रनवे है, उसकी कैपेसिटी 4.5 करोड़ पैसेंजर पर एनम है, उससे डबल क्षमता का ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये चारों टर्मिनल है, हम टप्पे टप्पे में कर रहे हैं। आज पहला टप्पा जो है, जो कि 2 करोड़ पैसेंजर पर एनम क्षमता का है, तो उसके लिए टर्मिनल बिल्डिंग का काम चालू है। हम 2 करोड़ पैसेंजर पर एनम क्षमता का और उसके साथ साथ 0.8 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो का, ये हम सबसे पहले शुरू करेंगे। और शुरू करने में जो अप्रैल में जो हम 17 तारीख जो हम बोल रहे हैं कि जब तक हमारा टेंटेटिवली पूरा हो जाएगा, उसमें डोमेस्टिक फ्लाइट हम सबसे पहले शुरू करेंगे। उसके 5-6 महीने बाद हम इंटरनेशनल। देखो, यहाँ की आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा। यहाँ की सुविधा बड़ी अत्याधुनिक सुविधा है, आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से, मॉडर्न फैसिलिटी के हिसाब से है। सबसे पहला मैं देखूंगा जब चारों टर्मिनल कंप्लीट हो जाएंगे, अगर किसी की फ्लाइट टर्मिनल 3 से है तो टर्मिनल 1 पे भी चेक इन कर सकता है, और टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 तक ऑटोमेटिक पैसेंजर मूवमेंट APM सिस्टम है, वो जा सकता है। आज अगर हम मुंबई में देखें, टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 पर अगर जाना है तो हमको बाहर निकल के बस, कार या किसी से जाना पड़ेगा, वो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएंगी। इस तरह की ऐसी बहुत सारी यहाँ पे मॉडर्न सुविधा उपलब्ध की गई है। और ये जो एयरपोर्ट होगा, वर्ल्ड वाइड ऑल मॉडर्न फैसिलिटी, टेक्निकल फैसिलिटी से इंक्लूडिंग सोलर पावर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, जो आज के समय के हिसाब से हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक हम सबसे पहले अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास प्रपोजल गया हुआ है। जो पुराना एयरपोर्ट है, नए एयरपोर्ट के बीच में एक 32 किलोमीटर की जो एक मेट्रो लाइन है, उसका प्रपोजल गया हुआ है। शायद अगले 15 दिन, महीने भर में हमको सरकार से मान्यता मिल जाएगी। ये मेट्रो लाइन है, ये बाकी की जितनी भी मेट्रो लाइन है उसको कनेक्ट करेगी। जैसे मेट्रो लाइन 3 है, मेट्रो लाइन 7A है, मेट्रो लाइन 2 है, मेट्रो लाइन 11 है, इवन कल्याण से आने वाली मेट्रो लाइन 11 है, इवन हमारी मेट्रो लाइन 1 है। तो ये सारी लाइन यहाँ से कनेक्ट होगी। जैसा कि आपने बताया कि अटल सेतु, जो कि मुंबई शहर, जो कि कुलाबा से यहाँ तक चिरले जंक्शन तक है, चिरले उल्वे जंक्शन से हम जो एक डायरेक्ट अपनी कोस्टल रोड हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जो कोस्टल रोड लेके आ रहे हैं, उसकी वजह से साउथ मुंबई से कोई भी इंसान या 40 मिनट में इस एयरपोर्ट तक पहुँच पाएगा। जो कोस्टल रोड का काम है, उल्वे कोस्टल रोड का, वो जनवरी 26 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ इवन थाने से भी एक नया रोड लाने वाला एलिवेटेड है, उसका भी प्रपोजल हमने गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। वैसे ही ईस्टर्न एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी के लिए भी यहाँ पे SBR और जो BR जो रोड्स के काम है वो भी चल रहे हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी एक वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी होगी, मेट्रो से होगी। उसके साथ साथ आपको बाय रोड तो है ही है, एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी है। और यहाँ के कैचमेंट जो एरिया होगा, कैचमेंट एरिया के लिए आपका मुंबई का तो होगा ही, नवी मुंबई का तो होगा ही होगा, उसके साथ मुंबई का भी होगा। कल्याण से आने वाली जो मेट्रो होगी उसके लिए MMR रीजन का भी होगा। साउथ मुंबई से आने के लिए वहाँ ऑलरेडी जो नवी मुंबई से हमारी जो मेट्रो आएगी वहाँ से भी कनेक्टिविटी होगी, प्लस पुणे का भी होगा। पूरा की पूरा हमको MMR प्लस पुणे इस एरिया का कैचमेंट हम लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रोविजन भी है, हम यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट भी शुरू करने वाले हैं, जो कि सिंगापुर और हांगकांग में जो है उस तरह का जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे प्रपोज्ड है। उसका भी एक DPR हमको तैयार करना है, वो वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून 9 करोड वार्षिक प्रवासी वाहतूक होऊ शकणार असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 2 रनवे आहे। त्यातील 1 रनवेचे काम पूर्ण झाले असून दुसऱ्या रनवेचे काम दुसऱ्या टप्प्यात करण्यात येणार असल्याचं अदानी ग्रुपचे CEO अरुण बन्सल यांनी म्हटलंय। So you see, first we need to see what is the requirement for customer or passenger in Mumbai. The current Mumbai airport is handling around 50 million passengers. There is a pent-up demand of almost 60-65 million already today, which means that 15 million passengers from Mumbai region are traveling to nearby states or other airports. So Navi Mumbai will augment or cater for that capacity. So it's not that Mumbai airport has enough capacity. So airlines are very, very keen on their own to move to Navi Mumbai to be able to capture that additional passenger growth Mumbai will have. Then every year Mumbai will continue to grow also. So of course we are working with the airlines. This is a new airport, it's a greenfield airport. So it will have all the modern amenities from day one, like biometric, connectivity of terminals. So of course, just by the nature that this is built in 2024-25 time frame, will have all the modern amenities from day one.
So that will be attractive enough for airlines to have their operation from here day one. So that is up to the airlines to decide. We are in discussions with airlines. Different airlines have different requirement to make any airport the hub. So once the airlines decide, we will share in due course of it. No, so you see, single runway can handle almost up to 50 ATMs per hour, 48 ATMs per hour. So one runway is ready. So capacity wise will not be a problem, but capacity, the problem will be terminal capacity. So it will not be runway capacity limitation first few years, because the terminal is only for 20 million passengers. So we cannot stretch beyond 20 million until the terminal 2 comes in. So runway will not be a limiting factor. While in Mumbai, runway is the limiting factor. So second terminal we will almost immediately start. We have already started the process of Terminal 2. Terminal 2 will have 30 million additional capacity, which should go live by end of 2028, say similar March time frame in 29, and we'll have 30 million passengers. When do you expect the international side of the terminal to be ready for operations? So the ambition is to have domestic, say 4 weeks after the inauguration because of the security suite, and then by end of July we should be able to start the international order. No, so we are working with, of course, the MMRDA, CIDCO and all to create the last mile connectivity, and we are very hopeful that the last mile connectivity will continue to improve. I mean, you know, there is a proposal for even new metro from Navi Mumbai to exist in Chhatrapati. Exactly. So those plans are in discussions. A lot of highway connectivity has happened. Last mile connectivity will also be ready in time for commercial operation. Talking to all the airlines, so all domestic airlines are big enough, so I don't think that they will move entire operations here. They will have to cater for both the profile of the passengers in Mumbai and Navi Mumbai. So they will have split operations between Mumbai and Navi Mumbai. Certain of the international airlines who are very few ATMs per day, they might decide to have either Mumbai or Navi Mumbai as the sole hub. So as I said, that the inauguration is currently planned for 17th of April. After the inauguration, because of the security sweep and requirement of the airport procedures, we need roughly 4 weeks post the inauguration to get the security sweep done and start the commercial operation. So commercial operation we are looking at, say, second half of May 2025. And this 17th April date comes because they need 70 days to get all the approvals done. So that's when we can, because we are expecting that on the day of inauguration, a lot of private aircrafts will come with dignitaries. So we need that license for those private aircrafts to land here, and that's why we have timed it to 17th of April. So, you know, day one, it will take time to ramp up to 20 million passenger capacity. Runway will not be a limiting factor in Navi Mumbai, because a single runway, as you have seen in Chhatrapati Shivaji's airport, can handle up to almost 50 million passengers. So in Navi Mumbai, runway capacity is not a constraint at all. The constraint will be terminal capacity of 20 million. But to reach 20 million will also take time. We will start with 10-12 million. With say 8 to 9 million domestic, 2 to 3 international, and after 6 to 9 months it will reach 20 million capacity. So runway will not be an issue. So we will start, as I said, somewhere between 8 to 10 million for domestic, then couple of million international when we start international. That takes us to July. By end of the year 2025, December, we should be at a full capacity. No, that's why we are, I mean, there are certain ITA guidelines which require the terminal capacity according to the area and the facilities available for it. So that defines the capacity of the terminal. The runway is decided by how many ATMs you can take the palace. So that's a technical reason. So we can only handle 20 million passenger at the terminal because of the facilities we are building in phase 1. So phase 2, as I said, that we have already started. We have already started the design work for phase 2. We will start the construction from next year, June-July time frame. That should be ready by March 29 with additional 30 million capacity. So by 2028-29 financial year, we will have 50 million passenger capacity at Navi Mumbai, and with 2 runways. No, so as you know that currently we have 8 airports, and there have been some discussion from AI and MOCA to privatize the next round of airports. When the next round of privatization happens, we will definitely look at it, evaluate and participate in the bidding process. तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 5,945 एकर जागेवर उभारण्यात आले असून या विमानतळाचा रनवे हा 3.7 किलोमीटर इतका असून या विमानतळावर एकाच वेळी 350 विमान उभी राहू शकतात असं कॅप्टन शर्मा यांनी म्हटलंय. जो माथेरान के ऊपर से फ्लाइट आएगी 26 के लिए और दरिया की तरफ से 08 के लिए, सब आज प्रोसीजर वैलिडेट करने वाले हैं. फिर ये जब रिपोर्ट देंगे तो फिर हमें अप्रूवल मिलता है प्रोसीजर्स का. उसके बाद वेरियस एप्लीकेशन डाले जाते हैं, उसके हिसाब से लाइसेंस मिलता है. तो लाइसेंस मार्च
के महीने में मिलना चाहिए। और AIP पब्लिकेशन 6 फरवरी को हम सोच रहे हैं। ये सब अगर सही हो गया तो फिर उसके हिसाब से 17 अप्रैल का डेट निकलता है। 17 अप्रैल को इनॉग्रेशन होती है, क्योंकि आपने कभी भी फ्लाइट चढ़े होंगे तो पूरी की पूरी एयर साइड CSF कंट्रोल करती है। इनॉग्रेशन के टाइम में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, उतने लोगों को पास देना पॉसिबल नहीं होता है। पहले हम इनॉग्रेशन करते हैं, फिर सब उसको सिक्योरिटी स्वीप करते हैं CSF वाले, फिर हम लोग को भी पासेस इश्यू करते हैं, फिर सब अपने अपने जगह पे बैठेंगे ऑफिस वाले, फिर उसके बाद एक ट्रायल होके फिर हम चालू करते हैं पैसेंजर। कौन से एयरलाइंस और ऑपरेशनल किससे लोग इंडिया में जो भी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, जैसे आपको इंडिगो, एयर इंडिया और अकाशा तीनों आने वाले हैं। ऐसे हम एक एक स्टेप को एंजॉय करते जाते हैं। आज का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट आगे वाला जब तक हम चालू नहीं कर ले पैसेंजर को और उनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दे दे, तब तक हमारा माइलस्टोन चलता रहेगा। आप जब पैसेंजर चालू हो जाएंगे, मोदी जी भी शायद आएंगे इनॉग्रेशन के लिए, उसके बाद हमारा सपना पूरा होगा। उसी पे कहने कि जब भी इनॉग्रेशन में बहुत लोग आते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी स्वीप होती है। करीब यहाँ पे 1850 CSF लोगों का सैंक्शन हुआ है, वो आ जाते हैं, फिर वो पूरा कंट्रोल ले लेते हैं एयर साइड का, फिर हमें पासेस इश्यू करते हैं उस बीच में, और एक इंटीग्रेटेड ट्रायल होती है। उसके बाद अपने मिड में एक कभी 30 दिन लगता है, कभी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, बट मिड में। तर उरण मतदारसंघाचे भाजप आमदार यांनी म्हटलं की माझ्या उरण मतदारसंघामध्ये आज इंडिगो एअरवेज फ्लाइट उतरत आहे, याचा मला सार्थ अभिमान आहे। निश्चित देशाचे यशस्वी पंतप्रधान, आमचे सर्वांचे नेते सन्माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी भूमिपूजन केलं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्या दिवशी मुख्यमंत्री होते, त्या दिवशी भूमिपूजन केलं आणि 17 एप्रिलपर्यंत आज कमर्शियल फ्लाईटचं टेस्ट लँडिंग आहे आणि 17 एप्रिलपर्यंत पूर्ण एअरपोर्ट तयार होईल। आणि या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं नामकरण हे दिबा पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ झालं आहे। तो पहिला संघर्ष भूमिपुत्रांनी जिंकला, त्याचा आनंद आहे। मिलिटरीचं विमान उतरलं, त्याचा आनंद आहे। आज कमर्शियल फ्लाईट उतरते आणि 17 एप्रिलपर्यंत पूर्ण एअरपोर्ट चालू होईल। त्याच्यामुळे जेव्हा एक एअरपोर्ट चालू होतं आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, तेव्हा राज्याचा 1% GDP वाढतो आणि 1 लाख लोकांना डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब मिळतात। त्याच्यामुळे माझ्या मतदारसंघामध्ये सुरू होणारं हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ निश्चित स्थानिकांना, माझ्यासारख्या लोकप्रतिनिधीला, राज्याला आणि देशाला अभिमानाचं बिंदू आहे आणि तो आज आपण अचीव करतो, एक एक टप्पा पुढे जातोय, त्याचा निश्चित आनंद आहे। मी रोज या अदानी ग्रुपचे जे CEO आहेत GVK शर्मा यांच्याबरोबर संपर्कात आहे, प्रत्यक्ष कामाचं पाहणी करतोय आणि सर्वांना पूर्ण खात्री आहे की येत्या 17 एप्रिलपर्यंत कमर्शियल फ्लाईट चालू होतील। निश्चित याचं श्रेय भूमिपुत्र आणि भूमिपुत्रांच्या 10 गावांच्या स्थलांतरांनी, त्यागानेच हे एअरपोर्ट उभं राहते आणि त्याचं पहिलं क्रेडिट आमचे लोकनेते स्वर्गीय दिबा पाटील साहेबांना जातं की ज्यांनी या नव्या मुंबईला एक वेगळी दिशा दाखवली। त्यांचं नाव या ठिकाणी एअरपोर्टला दिलं गेलं आहे आणि भूमिपुत्रांच्या कामाबद्दल, रोजगाराबद्दल जे आशान्वित होतो भूमिपुत्र, आता या 27 गाव संघर्ष कमिटी असेल, आमचं भारतीय जनता पक्षाचं युनिट असेल, अदानी ग्रुप असेल आणि सिडको, या सगळ्यांची समन्वय करून या ठिकाणी फक्त आणि फक्त स्थानिक आणि भूमिपुत्रच घेतले जातील, हा ठराव आम्ही केला आहे आणि आमच्या रोज बैठका चालू आहेत आणि मला खात्री आहे की एवढ्या सकारात्मक आणि एवढं डे टू डे कोऑर्डिनेशनमध्ये इथे स्थानिक आणि भूमिपुत्रांनाच न्याय मिळेल। निश्चित प्रशिक्षणही देणार आहोत आणि असं आहे की ते जेवढे सकारात्मक आहेत तेवढे आम्ही सकारात्मक आहोत आणि असं आहे की आपल्या भूमीचा जन्मच संघर्ष आहे। जेव्हा आपलं नाही पटणार तेव्हा मला माझ्या नेतृत्वावर विश्वास आहे, मला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजींवर विश्वास आहे की ते याच्यात त्यांनीच डायरेक्शन दिल्यामुळे हे सर्व स्मूथली चाललं आहे। अजून कुठे अडचण नाही आहे, अडचण आली तर त्यांचं इंटरव्हेन्शन करू। अहो कशाकरता उडायचं आहे, आम्ही उडवणारे आहोत आणि इथे खाली राहू, आपल्या भूमिपुत्रांना न्याय देऊ, गाववाल्यांना नाव देऊ, सगळ्यांना देऊ आणि पुढे जाऊ। आपण उडणारच आहोत। कमर्शियल फ्लाईट सुरू झाल्यानंतर आपण या इथूनच जाणार आहोत, तुम्ही आणि मी, सर्व नाही जग जाणार आहे। कारण मुंबईच्या एअरपोर्टचं एवढं कंजेशन दूर होणार आहे, तिथे जर 750 आणि 950 फ्लाईट उतरत असतील तर तेवढीच कॅपॅसिटी इथे होणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।